Hello and welcome to another edition of Let's Talk with me, Vineet, on Loofre. Well, today we've got a very special guest for you. In fact, he's so special that, he's a little bit insane. थोड़ा पागल आदमी है वो इतना पागल है कि वो अपने आप को ही पागल बोलता है। अब ये कौन है ये आदमी और ये क्यों अपने आप को पागल बोलता है? Let's find out more by getting him on. His actual name is Sawan, but he calls himself Sawan Madman. I'm just going to get the Madman on, and there you are. Hi, Hello, Mr. Sawan. How are you? hi. I'm good. I'm good. I'm doing How is madly the good. how is the lockdown treating you? Lockdown treating me very well. There's no much difference between lockdown and my See, I told you he usual was mad. schedule. He's saying कि Yeah. लॉकडाउन और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? uh, हम बाहर नहीं जा yeah. सकते, वायरस फैला हुआ है सब जगह और आप बोल रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं है। क्यों आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे कमरे में भी एक दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, हमारी इमेजिनेशन की इतनी बड़ी दुनिया है। सो लॉकडाउन से कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इमेजिनेशन इज you can't lock down the imagination, so Yeah, it's without that's boundaries. yes, that's true. We cannot lock down Yeah. the imagination and imagination की दुनिया ही जो Hmm. हमारे को एकदम फ्री रखती है सारे अपने ट्रबल्स और वरी से चाहे जो मर्जी बाहर हो रहा हो बट आई एम स्टिल इंट्रीग्ड कि आपको व्हाई डू दे कॉल मैडमैन ये क्या किसी और का दिया हुआ खिताब है या इज इट समथिंग दैट यू डिसाइडेड टू कॉल योरसेल्फ एंड इफ यू डिसाइडेड योरसेल्फ टू कॉल योरसेल्फ Sawan Madman and spread your words of wisdom called Savanism, as we can see on the screen over there. So, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि why, what's the story behind being mad? इसके पीछे भी लंबी स्टोरी है। तो हम मैंने यहाँ पर एक हमारे पास मेरी कहानी का लाइफ स्टोरी का एक छोटा सा स्लाइड शो है। Right. तो उससे शुरू करें हम। Yes, please. बताइए. या या सो लेट्स स्टार्ट इट लाइक अ मूवी। हर फिल्म शुरू होती है एक डिस्क्लेमर के साथ। ब्लैक स्क्रीन आती है, डिस्क्लेमर होता है। ठीक है, तो मैं अपनी बचपन की बात करता हूँ कि बचपन से मुझे बहुत एडवेंचरस चीजें करने का, आई लाइक टू डू एडवेंचरस थिंग्स एंड some wild things, mad things, like homemade archery, the bow and arrow, तो ऐसी चीजें। तो क्या था कि बचपन में हमारे एप्पल ऑर्चर्ड थे इन हिमाचल प्रदेश, मंडी। तो वहां से वहां पे मुझे बचपन में बड़ा ऐसा एडवेंचर करने का शौक था। तो हमने मतलब मैं डैडी को बोला कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक इन हॉलीवुड और लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर। सो हेलो, हेलो, Yes, I आर can यू hear देयर? you. I can hear you. Yeah, yeah. I gave you the whole screen. आप बोलिए ना. You're the hero. चलिए. हेलो। Okay, I'm back. बोलिए, बोलिए. या या वेलकम बैक। या so I am the hero, so I wanted to explore the screen, big screen, the films, the fantasy, how it creates, no. So I asked my father that I want to go to the Hollywood. He said Bollywood. I said Hollywood, and Hollywood, and I want to आप explore. छोटा So सोचते ही नहीं है he, मतलब हाँ बढ़िया. हाँ, so he just nodded like, Indian nod, na, like in between yes and no. So he said, yeah, just. So I said, okay, I'll go and explore the things. Huh? But so uh, the spark came from Bruce Lee also. Uh, the movies of Bruce Lee, the action, kung fu, fighting, it fascinated me कि हाँ भाई ऐसा मतलब कैसे कर लेते हैं, इतनी स्पीड कैसे है। सो आई वेंट टू हॉलीवुड। ठीक है, तो अब आउटसाइडर है, बाहर से आया है, इंडिया से आया है, तो आपको एकदम से जगह नहीं मिलती, आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया, कॉन्टेक्ट्स बनाने शुरू किए। तो कहीं कहीं तो जब मेरा पहला जो रियल कैमरा के साथ, जो एक सेट के साथ मेरा इंटरेक्शन था, वो फेमस मूवी आपको याद होगी, पल्प फिक्शन। जी. तो बहुत ही फेमस हाँ, मूवी है वो पल्प। तो. सो इट वाज लाइक अ कैंडी शॉप फॉर मी कि सब आई सी. कुछ एकदम बड़ा कैमरा है, लाइट्स हैं, इतना बड़ा क्रू है।
फिर उसके बाद सुपरस्टार्स एक्ट कर रहे हैं उसमें। तो वहां से मुझे, वहां पर मुझे वहाँ का जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसके साथ मेरा थोड़ा सा कांटेक्ट बनना शुरू हुआ, तो उसके कारण मुझे टीवी सीरियल्स में धीरे धीरे एक्ट करने को मिला, छोटे छोटे Wait, रोल्स that's करने को you. मिले। Oh my Yep, God. that's me. Oh, Oh. oh. Hmm. Then I started doing work with some big names, big actors, Angelina Jolie, and yeah, these are some of the movies I did, and yeah, so these little roles, and then suddenly the change came from that interaction with the Tom Cruise. So Tom Cruise is very like supportive guy. He support newcomers, actors, and so he guided me a lot in this journey. उसने बहुत कुछ बताया कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे तुम क्या कर सकते हो, है ना। तो काफी उसने कॉन्टेक्ट्स भी थे क्योंकि टॉम क्रूज। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे No, I जर्नी don't know और Tom बढ़ी। Cruise. You know Tom Cruise. Yeah, I can आई see मीन you या know यू नो Tom Cruise. So I I also know of started Tom working. Cruise. Yes, yeah. Go Yeah, ahead. as you know that Tom Cruise also do stunts, like his own stunts. So I also started doing some stunts in the movies, like with Tom Cruise and his whole crew. These are some of the screenshots. Uh, yep. Uh, Wow. so yeah, that was it. And another thing happened during the shoot also, that I got injured and I got Acha. fractured my leg, and Oh, oh, then uh, it was like लंगड़ा घोड़ा है ना। oh तो my God. स्टंट्स करने में थोड़ा सा फिर then I have to come back to India for my recovery and all, so because it was a good accident, like major accident. I see. Then I came to India, and then I started exploring my spiritual life and all. Basically, that was it, and I'm right now here. So, as I started my story from the disclaimer, so every film starts with a disclaimer, and it says the events, characters, and entities depicted in this presentation are fictional. Any Right. resemblance to or similarity to any actual events, entities, or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. So this was my little presentation, and it is also a TED talk. In TED talk, you can search by the name of Sawan Madman. So this all was fictional. I've never been to Bollywood, Hollywood, or I don't know, Tom Cruise. तो There's nothing like that. ये आप Uh, ऐसे ही मेक बिलीव इन योर ख्याली दुनिया, अब ये सारे आपके ख्याली पलाव थे, बट हाउ डिड यू डू दैट? आई मीन, सो आर so यू it started, yeah, it started. I'm a visual artist, basically. I do painting, drawing, and Photoshop. So, Photoshop, ये all these images are Photoshop. ये सारी So फोटोशॉप when की, I वाह। when, uh, when I started Photoshop, like any other beginner, they start manipulating photos and start putting themselves into the images. So I started doing it like a hobby, just for fun, just to create my fantasies look real. So what happened? That some of the images, people started feeling like they are real. उनको लगा ओह, इट्स कि ये तो वेरी असली रियल, में इट वहां लुक्स पर वेरी है। गुड, या पूरा कलर हाँ, करेक्शन, मैच, लाइटिंग वाइटिंग करके तो आपने या एकदम भयंकर काम किया। आई मीन, अमेजिंग। तो उनको लगा कि ये बहुत रियल है, असली है। तो क्या कई लोगों ने उसको प्रिंट भी कर दिया मैगजीन्स में, आई सी। ये सोच के कि ये असली इमेजेस है। कहाँ गई वो भी है आपके पास? आर यू गोइंग टू शेयर सम ऑफ दोस स्टफ विद अस? वेयर इज यस, दैट? यस, वन ऑफ दैट वाज ये भी आपने इमेज एडिट करके डाला है? ये ओ माय गॉड। दिस आल्सो, दिस वाज फ्रॉम द Avatar movie, वाह। and this Hulk, वाह। Mad Max, ओ माय गॉड। Pursuit of Happiness, and this was most viral photograph of mine अच्छा। because because of the comparison of the bikes.
I'm sure, like but you matched it absolutely spectacularly. तो आप बोल रहे थे कि ये सारी images किसी ने magazines में भी छपी, कहाँ छपी, नहीं क्या सारी नहीं, हाँ, सारी नहीं, इनमें से एक्चुअली इसमें वो इमेज नहीं है, दैट वाज फ्रॉम I गैंग्स see. ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ अच्छा, वासेपुर की एक उसमें इमेज भी थी आपने जिसमें अपनी मैंने, कलाकारी की थी। हाँ, थोड़ी सी कलाकारी की थी, और वो एक मैगजीन है उसमें छप गई थी। तो उन्होंने, उनको लगा कि वो रियल है, और वो फुल एकदम हार्ड कॉपी मैगजीन में छपी। तो क्या बात वहां है। से मुझे लगा कि मतलब मैं, आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ दैट व्हाट इज रियलिटी, व्हाट वी परसीव एज रियलिटी। तो और मैंने इस चीज को एक्सप्लोर किया कि जैसे अब न्यूज के हमारी बहुत बात होती है कि फेक न्यूज, और जी, लोग मान लेते हैं उन चीजों को, है ना, पूरा एक तरह से हमारी पूरी कंट्री उस चीज से, या पूरा वर्ल्ड लगा लीजिए, उस चीज से इफेक्टेड है बहुत ज्यादा। तो मैंने उस चीज को और सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों, मतलब कैसे हम किसी को भी इतनी आसानी से मनवा सकते हैं कि ये रियलिटी है और ये नहीं है। Then I started thinking about this whole presentation, TED talk and all. So I presented it in the same way, and I asked people that what do you think is reality? Why you believe anything and everything in newspaper, WhatsApp, or anywhere? Just question yourself. ना क्वेश्चन के, आप इतनी आसानी से क्यों मान लेते हो किसी भी चीज को? अब ये एक फोटो है, उसको अगर कोई स्किल्ड आर्टिस्ट है या कोई भी है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो आपकी पूरी परसेप्शन उसके लिए चेंज हो जाती है। सो जैसे हमारे जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज इल्यूजन, माया। So it's like that. The whole reality is depend on our perception, our exactly. What we senses. make of it. हाँ, Right. हाँ, जो हम बनाते हैं, जो हम देखते हैं, बस उसी के ऊपर। तो तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से फिर ये पूरा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया कि आई शुड चैलेंज पीपल, आई शुड आस्क देम कि व्हाई, हाउ। एंड देन लेट्स कम बैक टू द मैड मैन yes, थिंग। please. तो during the college days I was like, अभी still I am very sober, like in visual looks, तो I कॉलेज see. दिनों में तो आर्ट्स कॉलेज, आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज in Okay. 2009. So before that I was too loud, I was a piece of art. Art. uh, I was walking sculpture. I Oh used to wow. experiment with jewelry, like big jewelry, colorful clothes, and my bicycle was BMX with the, like, rear wheel was small and the front wheel was big like a chopper, a chop. अच्छा, So वाह, yeah. So people, जब भी मैं जाता था सड़क पे या कॉलेज में, इवन कॉलेज में भी लोग ऐसे बोलते हैं, पागल पागल, जैसे कमेंट कर देते हैं, पागल पागल। तो उसमें कहीं ना मुझे फ्रीडम मिलने लगी कि दे कॉल मी पागल, आई एम फ्री। हाँ, क्योंकि पागल कुछ बॉदर नहीं करता उसको, दे आर फ्री। हाँ, पागल है कोई, झल्ला है, क्या करना है इसको, क्या कहना है इसको, है ना। तो उसमें मुझे फ्रीडम मिलने लगी, देन आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग मोर, कि कोई बात नहीं, लोगों ने पागल ही कहना है, फिर क्या हुआ, है ना, पागल अपनी मस्ती में कुछ भी करिए है। देन I also read a poem by Khalil Gibran, The Madman. So he very beautifully said that I was wearing 9 masks that I lost. My masks are lost, and I woke up, and first time the bright sun kissed my face. So it's like that. Okay, I have lost my masks, and I am free. And in that वाह, freedom, in that madness, I find freedom. So क्या it's about बात that. है. The madness is Oh, about that. Mad people are absolutely. And free. yeah, and I guess that helps you express yourself Yeah. absolutely fantastically with no limitation, no boundaries, no nothing, because there Hmm. are no rules. I think, as children, when we're children and all, हमारा यही होता है कि children have fantastic imaginations because they're not bound or they're not governed Yeah. by all the rules and that limit their imagination, that tell them कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं सोच सकते. But education actually teaches us otherwise. Education teaches us क्या सही है, क्या गलत है, the ways of the world actually, which actually pollutes the mind and really stops the child from being a child and being and losing all the creativity and imagination, as you rightly said. So yeah, so I guess you probably try to reconnect with that particular thing by being free of all boundaries and limitations. And yeah, the madman is it. And so
you adopted that as your name, and then you became the Madman. Yeah. Awesome. Actually, I Fantastic. also feel that, as you said, I reconnect. Uh, I feel I've never disconnected. Okay. No, I for was sure, for always, sure, for yeah, sure. I was I always, mad. yeah, And then you I just was found the always, calling. Yeah, you just found the calling because you read all the poems and because of all the antics that you used to do. And I guess it just started fabulous, man. So that's where Madman comes from, and all your story of this. I've also heard something ki you went and did something even more insane. You have some tattoos also when you were yeah, yeah, I have some tattoos, like some tattoos. some tattoos. That tell us about your Yeah. tattoos. I've heard some very interesting stories. Like, why don't you tell us about your tattoos and the story behind the biggest tattoo that you've got? What is the biggest tattoo that you've got? Biggest tattoo I have on my back, like full Right, back. full It's back. a Okay, full back, leopard pattern, and there's a leopard there's a pattern. leopard's pattern, and there's a story behind it. I'm And do sure. you want Please tell to? us the story behind that. Do you have some visuals to go along with your story? Yes, Because you're. yeah, I have a video Let's actually. bring that on, sweetie. Let's see that, Mr. Madman. Can I add that onto the screen? Yeah, sure. Humans were born with dreams, and dreams were born with humans. I will rather use the word desires. We all have desires to fulfill, one after another. In this race, we have disturbed the cycle of nature. Indian leopard is amongst one of the big cats which are disappearing very fast because of human desires. He gave me this opportunity, and the best part about the whole concept was the leopard skin, which he got done. So finally, I guess we are finishing it today. We like after 26, 25 hours. It's literally like 6, 7 weeks after giving all the different sittings. We finally finished it, and I'm pretty happy. I'm very happy that we completed it, and I'm pretty sure about him. He would be very happy because it was his team faculty. So it was an honor doing such a good job, and I just want to see like how people gonna like react when they gonna see this piece because we haven't shown it to anyone till now. Natural patterns always fascinated me and inspired me to create my art. Even every man-made thing is somehow inspired from nature. Getting a tattoo is painful, but after some time, one starts getting pleasure out of it. Sometimes I wonder how much pain Leopard had when he was getting tattooed by nature. Leopard pattern makes me feel like leopard. It gives me strength and helps me in conquering my fears. We all have animals inside us. It was my desire to have him, and also my tribute to this beautiful endangered species. That's it. Wow, that is absolutely most amazing, Mr. Madman. You went and got yourself tattooed because of um, I'll tell. Yeah, I'll tell you the story also. That's it. fabulous. Yeah. So ये क्या Yeah. भूत सवार हुआ था आपको? I mean, I understand that. Okay, um, what? So इसकी रूट तो अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे
पीछे जाके है चाइल्डहुड में, लाइक जैसे अब इसमें भी मैंने बताया कि वी ऑल हैव एनिमल्स इनसाइड, ना वी आर एनिमल्स, वी हैव दिस बेसिक, जो लाइफ का, जो हम अगर बात करें लाइफ का जो बेसिक पर्पस है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जो हमारे ब्रेन के डीप अंदर छुपा हुआ है, तो वो एनिमल सबके इनसाइड है। सर्वाइव के लिए हम कुछ भी करेंगे। हाँ, तो शुरू से मुझे, आई एक्चुअली यूज टू डू मार्शल आर्ट्स, एंड मार्शल आर्ट्स में भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, लेपर्ड स्टाइल, टाइगर स्टाइल, स्नेक स्टाइल। तो मार्शल आर्ट्स किए, उसके अलावा एक वो एग्रेशन तो अंदर था ही, जो गुस्सा सबके अंदर होता है, एग्रेशन, तो वो चीजें थी। फिर 2012 में हार्ली डेविडसन ने एक कंपटीशन चला निकाला था, जिसमें अच्छा, क्या था कि एक जो मायन कैलेंडर्स के मुताबिक 2012 में अर्थ खत्म हो जाए। अच्छा, तो हार्ली डेविडसन जो ब्रांड है, उसने एक कंपटीशन निकाला कि 20 थिंग्स यू वांट टू डू बिफोर वर्ल्ड एंड्स। तो ओके, उन्होंने सो 20 थिंग्स की एक लिस्ट, हाँ, एक लिस्ट पूरी निकाली थी कि आप इनमें से एक चीज सेलेक्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं दुनिया खत्म होने से पहले। ओके, जिसमें एक था गेट योर ड्रीम टैटू। सो आई लव बाइक्स, आई लव machines, so Harley Davidson, and their award was bike, Harley Davidson bike, रियल super low, लाइफ बाइक, वाओ, real bike. So uh, I, I just said, like, I had a friend who also wanted to do a like big size tattoo, and he had me as a canvas, and I had him as an artist. So I said, let's do it. करते हैं, देखते हैं, हाँ? So I had designed the leopard pattern. So we started, and it took us around 5 weeks, because we had to do sittings, like 3 or 5 or 6 hour sittings every day. राइट, No, not every day, but once in a week. So the final result was the tattoo you have seen, and this was a all India competition. So there अच्छा, has to be just one winner, one bike, one winner, and you can share my screen again. ओके, लेट मी शेयर, where is your screen? And Okay, then let's this add it to the happened. stream. Oh my god, you won? You Yes, won? yes, I You won. got a real life Harley Davidson, and you're actually visual idea of putting this thing. Wow, that's amazing, Yeah, man. Congratulations. yes. Wow. Thank you, thank you. So I was the winner, like all India, just one winner, Wow. and that was I. So this was the stage during the competition Wow. results. So this is what you look like. Most amazing. Yeah. Dream come true, boss man. Dream come Yes, true. definitely, definitely. क्या बात है. और hats off to your creativity and your mad Savanism, जिसमें, so you actually made that video of the whole process and everything, and then you shared that with Harley as your entry, Hard. and Yes, yes. Yeah, yeah, that's how you got into that. Fabulous. yeah. Thank you. फिनोमिनल मैन. तो आपकी क्रिएटिविटी ने आपको एक हार्ली डेविडसन जिता दी. देखो जब भाइयों बहनों और हमारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं, कि अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्ली की सवारी करना चाहते हैं तो आपको सावनिज्म फॉलो करना चाहिए, और हमारे मैडमैन की तरह आप भी कुछ अटपटी चीज करें जो आपको एकदम अलग कर दे पूरी हिंदुस्तान में, जिस इस केस में. बट या, एज इन लाइक देयर इज नो लिमिट्स, देयर इज नो बाउंड्रीज टू व्हाट anyone can achieve. This is Yeah. phenomenal, man. So you got your Harley, you started your ride, you won this because of your thing, and then what next? What else do you do? I mean, we know you're a crazy soul and crazy kind of a person and all, but what else? But I do graffitis. Like recently, I've been uh, uh, I was in the show called Dangerous Borders by BBC. Acha, So what it was about the 70 years of partition. I कि see. 70 साल हो गए हैं अब इंडिया और पाकिस्तान में, क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे अगर हम पार्टीशन की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया से ज्यादा पंजाब का पार्टीशन था, है I ना, see. पुराने पंजाब का पार्टीशन था। तो बीबीसी ने ये एक सीरीज निकाली थी 3 एपिसोड्स की, जिसमें एक जो एंकर था उनका, एक जी, वो पाकिस्तान में था और एक इंडिया में।
जी। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या लोग सोचते हैं, एट द सेम टाइम इंडिया में क्या हो रहा है, क्या लोग सोचते हैं. So I was featured in Indian part ओह as वाह! a graffiti artist, and अच्छा। yeah, So as you so a you do graffiti art. you do big graffiti on walls and murals and all that kind of stuff as well. That's what you're saying. Yes, yeah, yeah. Is that that makes you money, is it? Yes, it makes me money. वाह! So that is your profession. So आप murals paint करते हैं, graffiti paint Hmm. करते हैं दीवार पे. Uh, yeah, because of your art, you've got Harley Davidsons and things like that. Do you have a hobby? Do you collect anything? कुछ Yes, yes, I do collect. I collect little big cars, Hot Little Wheel Big cars. Cars. Oh, you also collect Yeah, Hot Wheels cars. Yes, of yeah, course. You I you do. you are the actual founder of the Hot Wheels Collectors India Group and the Yeah, Matchbox Collectors, which was later changed by us to 1:64. So not many people know, but yeah, Savan and I met way back. I think it was 2012, 2013 or something. Soon after he yeah, won his Harley Davidson and. Yeah, he came up with the idea of starting this group of collectors. मैंने कहा यार कौन collect करता है, हम सब बड़े लोग हैं ये वो. And then इसने अपना पागलपन मेरे पे भी उतार दिया. And I said why not यार, ठीक है हम group शुरू hmm, करते हैं. And I think that's when we started the group. And yeah, you were very active then before your murals and paintings and all of these other artistic creative kida overtook hmm, the Hot Wheels wala कीड़ा. But can you share some of your collections and some of the things that you did? I mean, ठीक है, collection yeah, तो एक part है, लेकिन I'm sure आप photograph भी करते थे उसकी and create different yes, themes and stuff like that. And also show us some of your pictures. I'm sure that some of our collectors would love to see all of that stuff that you do over there. yeah. First, I will share some modified zombie car I did. Oh, modified zombie cars, is it? Oh my Yeah, goodness. I just played around because artists always want to put his own style, There you identity into go. things. Yeah, Yeah, one of our very first customizers at Hot Wheels when nobody really was customizing anything. And आप इसमें, oh my God, ये yeah, असली कीले हैं जंग लगी हुई वाली. Is that what we're yeah. looking at? Oh हाँ, my हाँ जी. God. असली कीले, असली Uh, जाली है. Then I sculpted एक स्कल्प्ट की थी, एक zombie स्कल्प्ट किया था छोटी एमसील से. okay. Wow. And then this is before and after. That was चले. before, and this is what you made it out to be. A couple apocalypse indeed. My I hate goodness. zombies, and it's You written hate I zombies. hate zombies. All right, so you made it into a Yeah, zombie killer car and all. That's yeah, phenomenal. yeah. Absolutely, absolutely phenomenal. And this is the little zombie. Oh my God, so cute. Cute zombie. No, I'm sure And some of our then collector yeah. friends would be watching this, would be most amazed at this kind of an art. Show us Mhm. more. This is just a matchbox, some photography. वाह. So where do you get these small figures? ये भी आपने खुद बनाए थे या ये कहीं से आप Hey, I लेके found आए? I found these on some shop. Okay, figurines and now Uh, 1:64 scale मिलना तो बहुत मुश्किल है. हाँ, Crazy that you ऐसा found them. हाँ, ऐसा होता है ना कि जैसे हमें कुछ चीजें पसंद, जैसे समझो हमारी बॉडी पे कहीं चोट चोट लग गई है, तो वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है. वहां पे थोड़ा Right. सा भी लगे तो आपको दर्द होता है. तो ऐसे ही जैसे आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं, तो आप सब चीजों में वो चीजें देखने लग जाते हैं, कि उनसे कनेक्ट करने लग जाते हैं. तो Right. आपको वैसी चीजें मिलनी भी शुरू हो जाती हैं. Oh, fabulous. So we call हाँ, this the butterfly effect, and also I guess in your case butterfly you're saying effect that. of or law of attraction. So whatever you really want, if you really set your mind to it, it will come to you irrespective of what the odds are of getting it. I mean, yeah, I think in Yes. your case it proves absolutely Hmm. phenomenally crazily correct Hmm. because whatever you wanted and you just set your mind to it and you just work towards it and you got it. So you had that. And this is again edited with Photoshop and a couple of other. Yeah. Oh wow, Yeah. स्टंट वाली लगती है आपकी वो वाली आदत अभी भी गई नहीं है. बट आई मीन नहीं हॉट गई. व्हील्स खेल के साथ भी उसमें भी आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे Hmm. हैं. This is crazy, absolutely nuts. What else? Show us more pictures. Ooh, that looks like it's in is full motion.
I don't know. Oh Yeah, wow, fabulous. That's a Hummer, isn't it? Hama. Yeah, Hama. Wow, perfect. And the Oh my whole God, rally look at that setup. lineup. So, did you also make movies with all of these cars of yours, or Yes, I made some. I made you made some. movies as I well? have. Of course, you're a visual artist, and all. Do share some of those movies with us, dude. Yeah. I'm just going to give you full screen and also you can play that thing. So yeah, I'm not in the picture and all, and we can just see Okay. that. So these are small, not big videos, like small clips. One was this, and then Fast and Furious. I'll let it play. This I tried to imitate the last scene of Fast and Furious, the first one. So that's like a stop motion video. Would have taken you immense amount of time to do something like that. That's crazy. कितना time लगा था आपको उसको बनाने में? Because I realized when you can we play that again, please? I want to ask you a couple of questions about that. You got another stop motion video that you created? नहीं stop motion अभी यही है. Phenomenal. So all this is the smoke and everything you've added it in Photoshop और Yes. फ्रेम बाय फ्रेम आपने इसको फोटोग्राफ कर करके कैमरा घुमा के ओह माय गॉड लगता है आपकी टॉम क्रूज के साथ वाली जो ट्रेनिंग है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे काम आ इसके गई. बाद हॉलीवुड वाला जो आपने काम किया था चाहे खाली ही काम था और whatever it is but fabulous this is fantastic work. Thank you very much. And then What I else? You have have any this more another. videos to share with us? Yeah, share. Just just some shots. Oh my god. This is really really inspiring stuff for all the kids and everybody else watching कि लॉकडाउन में अब हमें पता चला जब आपने कहा था ओ वाह So I was so did just you playing around. I can see that you're playing around I can see that you're being very very creative and I can see जब आपने beginning में कहा था कि this lockdown is not going to drive you mad because you've got your imagination and you've got all of this so you went and got a tattoo. You won a Harley Davidson motorcycle. You modified your BMX cycle. You got your ears pierced. You collect Hot Wheels cars. You paint murals and all of these things. You create movies and stop motion stuff and all of these things. ये जो आप कर रहे हैं या anyone can do it at home if they really set their mind to it and if Yeah, they're free of all their fears and anxiety कि ये ऐसे नहीं हो सकता या वैसे नहीं हो सकता या हमें ऐसे ही करना चाहिए हम वैसे नहीं कर सकते so this is a great lesson for all of us now coming yeah, back to your murals and stuff and all do you have some of that stuff to share with us कि आप किस yeah. तरह के murals बनाते हैं I are they for do. like corporate clients are they for general public are they for exhibitions or art galleries किस तरह का काम करते हैं आप I do all kind of like for corporate clients, for institutes, for
restaurants, cafes, and for myself also, and for society also. So I'll show you some of them. Oh, Have to, yeah, let's share the screen. there we go. Tell us about Yeah. this one. This one I did in a school, a government school, near in Baddi. Yeah. So it was just जो हम अभी imagination की बात कर रहे थे कि इमेजिनेशन को कई बार हम ऐसे बोलते हैं जब पर लगा के उड़ना खुले आसमान में जहाँ पे जो कोई बाउंड्री नहीं है, स्काई इज द लिमिट जैसे हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉट्स हैं बीच में, कुछ बुक्स हैं जो उड़ रही हैं, प्लैनेट्स हैं, जैसे बच्चों की एक इमेजिनेशन, सब कुछ है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं हम, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये थोड़ा उससे इंस्पायर्ड था, इसी दीवार के साथ। और ये काफी लंबी दीवार थी, 2 फ्लोर्स। फिर इसके साथ एक और किया था जो कि इसी के साथ ही, हाँ, साथ में दीवार थी, ये भी कुछ सिमिलर उससे जुड़ा हुआ। और इसमें मैंने कोलैबोरेट किया था पीएनजी, जो शिक्षा उनका एक वेंचर है, उसके साथ। तो उन्होंने इस चीज को पूरा स्पॉन्सर किया था। तो ये उसके लिए इसमें अगर आप साइड में देखेंगे तो वो सेम एक कोट है बाय आइंस्टाइन, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन के साथ आप कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। देन दिस आई मेड फॉर अ प्राइवेट क्लाइंट। ये एक मंदिर के अंदर है बैकग्राउंड, इसके आगे स्कल्पचर्स रखी जानी थी, विष्णु एंड लक्ष्मी की। पीछे सी है, कमल के फूल। एंड देन दिस इज माय पर्सनल वर्क, I call it Danda March, and it was inspired from Dandi March, जो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ मॉब लिंचिंग का बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो उसको मैंने रिलेट किया कि गांधी के साथ, जो नॉन वायलेंस को मैसेज देते हैं, एंड ही वॉक विद स्टिक, लाइक वॉक half of the country, and then now we us, from same country, we are like using the same danda, the same non-violence thing to kill people. We have shifted from non-violence to violence. So it was inspired from that. And then there's another. This is close to my house, and this is the oldest house in the area. जो सब बाकी घर हैं वो बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, लेकिन ये अकेला एक घर है जो पुराना है, और इनके पास अभी भी ये बफलोज रखी हुई हैं इन्होंने। तो मैं चाहता था कि इस घर को थोड़ा सा ब्राइट बनाना, कि ये क्योंकि पुराना है तो थोड़ा स्टैंड आउट है, एक हेरिटेज है ये। तो इस पर मैंने एक म्यूरल बनाया था, लैंडस्केप सन विद अ डियर स्टैंडिंग इन द बैकग्राउंड। दिस वाज आल्सो फॉर a restaurant, in front of a restaurant, Buddha. And then this is another personal work. It is in sector 22, Chandigarh. और ये है चार्ली चैपलिन एंड द बॉय मूवी। तो इसमें मैंने चार्ली चैपलिन और बॉय दोनों छुपे हुए हैं, जिन्होंने दीवार पे एक ग्राफिटी बना दी है और पीस का सिंबल बना दिया, और अब ये पुलिस से छुपे हुए हैं ताकि इनको कोई पुलिस पकड़ ना ले, क्योंकि इन्होंने एक दीवार को डिफेस कर दिया है। देन दिस आई मेड, इट इज ऑल्सो पर्सनल वर्क। आई मेड दिस इन अ विलेज, सियोंक, सियोंक करके एक विलेज है चंडीगढ़ के पास। तो उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए भंगड़ा, जैसे भंगड़े में घोड़ा भी डांस कर रहा है, अपनी मस्ती में दोनों लोग डांस कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो सेम विलेज। इसका टाइटल मैंने रखा था कि टर्टल्स कैन फ्लाई, इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी, ईरानियन मूवी टर्टल्स कैन फ्लाई, जिसमें बच्चे, जो टर्टल है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों को एक वो फ्यूचर में करने की, काम करने की, उड़ने की, बड़ा करने की एक वो रहती है कि हमने कुछ करना है। लेकिन अभी जो मैंने उसमें दिखाया, तो इफ यू कैन सी, ही इज वेयरिंग वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। तो बच्चे अभी वर्चुअल रियलिटी में उड़ रहे हैं, मोबाइल्स के साथ, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, एंड व्हेन दे विन दे फील लाइक दे हैव अचीव्ड समथिंग, दे हैव वन।
पबजी हो गया या और ऐसी गेम्स हो गई. So it was inspired from that. The kids are flying, but in a virtual world. And then this is a personal client's work. Uh, it was someone's room. तो ये कमरे में डेकोरेट किया था. This is Punjab University during a Rose Festival. So I painted this 3D cube on the road. This is another for a private company called Travelopod, and they deal with the air tickets between Canada, America, and India. So this was done for them. And then I did this work for Indian Navy. It's in Valsura. It's in Gujarat, जामनगर. तो वलसुरा एक उनका बेस है. और जो बेस की हिस्ट्री है वो ऐसी है कुछ के जो बिस्मार्क एक शिप था, काफी बड़ा शिप था, जर्मन. और उसको सिंक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. तो जो कि सिंक उन्होंने खुद किया था. जो शिप, क्योंकि उसका एक प्रोपेलर डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो डिस्ट्रॉय किया था ये जो स्टारफिश एरोप्लेन्स हैं रॉयल नेवी के. तो इन्होंने इसका प्रोपेलर डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड दे हैड नो चॉइस टू संक देमसेल्व्स. तो उन्होंने खुद को अंदर से ब्लास्ट करके इस शिप को सिंक किया था. उसके बाद से ये वल्सुरा बेस जो बना, और वहां पर टॉर्पीडो की ट्रेनिंग, वहां का जो स्पेशल ज्योग्राफी है वेव्स की और सी की, वो बहुत सही है इस ट्रेनिंग के लिए, टॉर्पीडो ट्रेनिंग के लिए. And then I made this wall. This is a very like huge wall, and it was inaugurated by Admiral himself, Vice Admiral and ex Admiral. They came to inaugurate it. And this is another wall in the same base. It was their Chinese based restaurant, and I painted this landscape there as a background for their stage. And another, this one also for the same base. And you can see the Vikramaditya and our fighter jet, and those army officers are based on their ranks, like in increasing order from low to top. This was also for the same base. And these are some of the newspaper wall. Is canvas. This is my house. Behind my house, I painted my house with my portraits. That is you, and you painted yourself on the house ताकि कोई भी पूछे कि ये पागल इंसान कहाँ रहता है ना, तो तस्वीर Yeah. देख लो, वही है, वही है. Yes, yes. And you वाह, can also see hashtag Savanism. वाह, absolutely insane. तो ये Yeah. तो आपका म्यूरल्स और ये सब काम हो गया, एंड you're a very well featured artist Yes. all over the place, magazines and this and that. What else do you do? Is there anything else that you have handle on? क्योंकि आप art तो करते ही हैं. What about, have you ever thought about doing anything else in terms of I don't know, paintings, और छोटी छोटे स्केल पे भी आप कुछ करते हैं, या आप जो भी आप करते हैं Yes, एकदम yeah. insane बड़ा बड़ा ही सोचते हैं? नहीं, छोटे भी, छोटे का अपना मजा है. छोटा भी बहुत छोटा, छोटा बल्कि मैंने ज्यादा किया है, क्योंकि छोटे से आप बेस बनाना शुरू करते हैं. आप स्केचिंग से, Okay. ड्राइंग से, पेंटिंग से, पेपर, वो आपका बेस है. जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, स्केचिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू कैन मेक बिग paintings or drawing. So I have with me some small uh, portraits, watercolor I have, then I have pencil, charcoal. Quickly You want show to us some see? of those. Yeah, yeah, please, please, quickly show us some of that stuff. So these are some of my marker drawings, markers with markers. Pencil, these are all markers. Pencil, this is pencil, self-portrait, Wow. pencil. This is charcoal, pencil.
तो ये सब करने में आपको कितना टाइम लगता है approximately? I mean, know that you said that you had gone to attended Chandigarh Art College and you passed out from there and you started doing all of these things. But how much Mhm. time does it take you to do something like this, maybe? It depends on the medium. Like in pencil, it takes me like from 10 seconds to 10 hours. It all depends on the detail and the subject. अगर मुझे एक sketch बनाना है, quick sketch बनाना है, it can take 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds. हाँ, फिर उसके बाद अगर मुझे drawing में और डिटेल करनी है, तो it depends on कितनी डिटेल करनी है, उसके हिसाब से मुझे 10 घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं. देन वाटर कलर ऑल्सो, वाटर कलर, द वाटर कलर इज अ क्विक मीडियम. आपको फटाफट गीले गीले में पूरा करना होता है, तो आप उसमें उसमें भी सेम डिटेल पे डिपेंड करता है. जैसे इसको मुझे ये जोकर का जो पोर्ट्रेट बनाया था, इसको मुझे अराउंड 2-3 घंटे लगे होंगे. Wow. तो या L- फिर But watercolors में वही सबसे जस्ट बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि अगर एक भी गलती हो जाए then you can't go back and fix it. I mean, you're stuck with that और जो भी है फिर आप वैसे ही करते हैं. यस यस. और इसका मैं एक एग्जांपल भी, जैसे आपने बोला ना गलती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होती है एक्चुअल में. अच्छा, वो आर्ट बन जैसे जाता है, हमें वो आपका स्टाइल हाँ, बन जाता है. आई सी. जैसे हमें बचपन में एक चीज बताते थे ना कि एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लगाई है, और वो बच्चों से पूछता है कि इस लाइन को आपने छोटा करना है पर मिटाना नहीं, बिना मिटाए ओके. छोटा करना है. ओके. तो उसका एक सॉल्यूशन, एक पागल बच्चे ने आके एक और लाइन लगा दी उसके साथ जो कि उससे बड़ी थी, तो वो अपने आप छोटी हो गई. तो स्मार्ट. इसमें भी ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्केचिंग में ऐसा ही है. अगर आपको आपने कोई गलत लाइन लगा दी है या आपको लगता है ये गलत है, तो आपने उसको बिना मिटाए उसके साथ सही लाइन लगा दो. तो अब क्योंकि हम इतने टाइम से चीजों को देखते आ रहे हैं, फेसेस को देखते आ रहे हैं, तो हमारा जो आईज हैं वो सही लाइन को ही पकड़ेंगी, वो सही लाइन को ही देखेंगी, वो गलत लाइन को इग्नोर कर. तो इसलिए कुछ है नहीं गलत. इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन. क्या जैसे हम पहले बात है. बात कर, Another रियलिटी. word, the pearls of wisdom from Sawan. You guys call it Savanism, more Savanism. Fabulous. तो ठीक है जी. आपने तो अब ये भी बता दिया कि do not use an eraser but try and do something else which, जैसे कि आपने कहा, will always catch the eye more than anything else. लेकिन कई इवन लोग ऐसे होते हैं जिनको ओसीडी होता है, जैसे मैं हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. मेरे को डिसऑर्डर. गलती ही दिखती है, मेरे को सही चीज तो सही है लेकिन जो गलत लाइट होगी ना, वो हम्म. आंखों में सबसे ज्यादा चुभती है मेरे को. हम्म. ये मेरा मेंटल डिफेक्ट है. पता नहीं यहाँ से सावनिज्म की और क्लासेस लेनी पड़ेंगी. हाँ. एटलीस्ट सम मोर स्टफ कि गलती को छोड़ो और सिर्फ अच्छाइयों को ही देखो और उसी में पॉजिटिविटी. So I'm sure that with all this work that you do and being a painter, illustrator, mural artist, Hot Wheels collector, and so much more, कि हम्म. आपकी mental condition would be very very stable because you're a very positive side, kind of a person. हम्म. हेलो. Wow. Yeah, tell me. या So that's it. Now, नहीं very ऐसा. positive kind of a person, and या everything is right, and there is no wrongs. And like you said, कि it is all on the perception. अगर आप हाँ. देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं. If you want it to bother you, it will bother you. If you don't want it to bother you, it won't bother you. I think यस. that's what life is, and that is what the simplicity is. And I think that's या. that's one of the reasons why, in spite of the lockdowns and the hardships that everybody is going through, you've still हम्म. managed to keep yourself sane, and you've still managed to keep yourself occupied, and you've still managed to be a bright, chirpy individual who's doing crazy stuff. So I can see why. You're very very talented, and you obviously have no issues keeping yourself entertained during this lockdown. Now, in closing, या. one word of shamanism to inspire our audience as a giveaway, as a parting gift. As a giveaway, for me, yeah, it's all about train the brain. Okay. जैसे पुरानी कहावत है ना, मन जीते जग जीत. तो आपको बस मन को जीतना है, क्योंकि मन जो है वो बहुत एक पागल बंदर की तरह है, जैसे ड्रंकन मंकी.
ये बुद्धिज्म में ऐसे बोलते हैं कि इस बंदर को आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि राइट, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि यार मेरा आज मन नहीं कर रहा, यार आज नहीं करते हैं, यार कल करेंगे, यार आज ये मन है, आज वो मन है। तो इसको अब देखो, हम बोलते ही ऐसे हैं कि जैसे मन कुछ और है, मन कोई और चीज है, मेरा मन, मतलब मैं और मन अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो मैंने मन को कंट्रोल करना है, तो उसी के पीछे सारा ये झंझट है। कि जो झंझट। लॉकडाउन लॉकडाउन की अगर हम बात करें, है ना, तो हम हम्म, ऐसे बोलते हैं यार आज मन नहीं है, आज मेरा बाहर जाने का मन है लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जब हमारा जिस चीज का मन नहीं होता, वो चीज हम तब करें, तब अलग ही बात होती है। देन यू आर लाइक ट्रेनिंग योर ब्रेन, ट्रेनिंग योर माइंड, कि अब उसको ना थोड़ा सा हम सूथ कर रहे हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना सूथ करना, कि उसको राइट। थोड़ा सा हम ट्रेन कर रहे हैं कि भाई यू आर नॉट इन चार्ज, आई एम इन चार्ज, आई विल डू एंड यू जस्ट ओबे द ऑर्डर्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि लाइफ का पूरा झंझट ही वहां से शुरू होता है कि हम मन हमें कंट्रोल करने लग जाता है, हमको मन को कंट्रोल करना। सो दैट इज Ah, इम्पोर्टेंट। interesting, because a lot of people think otherwise, and a lot of people say otherwise, that you know it's the mind that rules the heart, and the heart rules the mind, and all. But what you're trying to say is something else, which is very contradictory to any of these things. So ये दिल माइंड को कंट्रोल कर रहा है, या माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा माइंड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। देयर इज समवन बियॉन्ड माइंड एंड हार्ट, है? विच ओके। इज लाइक कॉन्शियसनेस, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, जो हमारे थोड़ा पीछे पीछे बैठी है जैसे। राइट। हाँ, इससे मुझे एक और चीज याद आई। आई आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स विद माई सेल्फ, लाइक बॉडी ओके, एंड। तो एक बार बिल्कुल मैंने क्या दिखाया किया फिर। था, मैंने हाँ। खुद को ब्लाइंड, हाँ खुद को मैंने ब्लाइंड फोल्ड किया था 10 दिनों के लिए, 24/7, टेन ओके। डेज स्ट्रेट। ओ माय गॉड। सो या आई वांटेड टू लाइक टेस्ट माई सेल्फ कि अगर हम एक सेंस बंद कर देते हैं, जो कि हमारी बहुत मेजर मेजर सेंस है हमारी विजन, तो हम उसको अगर बंद कर देते हैं, देन उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हाँ, हमारे जो सोचने के तरीके पे, या चीजों को देखने के समझने के तरीके पे। तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया, जैसे पहले 2-3 दिन मुझे बहुत ज्यादा एक वो हुआ, अन, अन, अनरेस्ट, के हाँ भाई अभी उतार दो, अभी खोल देना है यार, हटा देना है इसको। देन आई कंट्रोल माय ब्रेन, लाइक कंट्रोल, रिलैक्स, इट्स ओके, आई एम इन चार्ज, लेट मी हैंडल इट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा वेट करते 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 आगे, देन आई स्टार्टेड लाइक, मेरा जो हियरिंग सेंस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ वहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है ना। देन फिर मैं, जो म्यूजिक है ना, आजकल हम म्यूजिक सुनते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं जब म्यूजिक सुन रहा था, आई स्टार्टेड लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, मोजार्ट, बिथोवन। एंड सडनली एक दिन क्या हुआ, टीवी पे किसी ने कोई पंजाबी गाना लगा हम्म। दिया। एंड आई वाज लाइक, जस्ट स्टॉप इट, बंद करो इसे। एंड सेम टाइम आई रियलाइज दैट हम सिर्फ खा ही गार्बेज नहीं रहे हैं, जो हम खाते हैं फास्ट फूड और ऐसी चीजें, हम सिर्फ खा नहीं रहे हैं गार्बेज, हम सुन भी गार्बेज रहे हैं। ऑडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हम देख भी राइट, गार्बेज रहे हैं। तो वो राइट। सभी जो हम पहले भी इंफॉर्मेशन परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर क्या जा रही है, कहाँ से जा रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उस पे भी हमें लगाना चाहिए एक Yeah, but बैरियर्स एंड yeah, but फिल्टर्स। yeah, today's day and age, social media, ये वो, टिकटॉक अच्छा हुआ बैन कर दिया या यहाँ पे, थोड़े थोड़े सोल सेव हो जाएंगे। लेकिन जो गंद उस पे चल रहा था, और जो चीजें चल रही थी, श्योर इट गेव पीपल a lot of avenues to make money and to create weird content, जो कि कहीं पे दिखता नहीं था, क्योंकि लोग टिकटॉक जाते ही इसलिए थे कि ये weird और अजीब व गरीब तरीके का content, या mimic and do all of these silly things. But I think silliness, you're right, silliness has become a part of today's lifestyle, as I would say, कि अगर आप टिकटॉक पे नहीं हैं, या अगर आप एक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, या आप लोगों को उल्टी सीधी चीजें या ये सब करके स्टंट्स वगैरह ये सब करके नहीं दिखा रहे, या वो नहीं कर रहे हैं ना, तो
it seems that you're nobody. But I think, having you on the show has given us a lot of crazy kind of an input as to how we need to do it. I mean, you also go by another name, which is called Dhasu Sadhu. So what we're going to Nasu do Sadhu. is that, yeah, right. So you're the Sawan Madman who's the Dhasu Sadhu also. Hmm. And now it all makes sense ki why, how these things are related. Or ye pagalpan is not actually pagalpan, but it is limitless exploration of the mind to seek out and create whatever it is without any kind of boundaries. Thank you so Hmm. much for being on the show with us and taking your valuable Thank, time out and thank all. It's been a real pleasure. As always, my friend. Sawan Madman, ladies and gentlemen, you can go and check out his website, his Facebook page, follow him, see the crazy kind of stuff he does. I'm sure he writes poetry and his other you. Yes, I do. inspirational quotes and everything. I'm sure you'll find them on his Facebook page and his. You're on Instagram, right? Instagram. Yeah, I'm more active Right. on So Instagram. you're yeah. So he's more active on Insta. What's your Insta handle, my friend? Savanism everywhere. Savanism. Sarvanism everywhere. There you go. So you won't have any trouble finding him on Insta or on Facebook or anywhere. Savan Madman, famous for his Savanism, aka the Dasu Sadhu. Thank you so much, sir, for being with us on the Thank show you and for having inspiring me. all our viewers and everything. So till Yeah. next time, we'll Hmm. get you. We'll be back again on Loofre with another guest with me, Vineet, on Let's Talk. Till then, take care, stay safe, and hopefully learn something from our dear friend. Explore your mind, open it up, go mad.